टर्म के आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट्स स्टेट डाटा? इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू ऐड फीचर टू एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट री राइटिंग दैम। ये क्वेश्चन है, person has a name, age, address and sex. Designing class to represent type of person called patient. तो इसमें जो है इसका पढ़ लें, क्वेश्चन लंबा है। रजिस्ट्रेशन डेट एंड डायग्नोसिस इसका आंसर है। व्हाट प्रॉब्लम में अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर? ये डैंगलिंग पॉइंटर भी होगा, मेमोरी लीकेज, सिस्टम क्रैश, तीनों चीज़ें हो जाएंगी जब हम कॉपी ऑब्जेक्ट करेंगे विदाउट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर से। ऑल ऑफ द गिवन आंसर है। This pointer are not accessible for static member functions. True. Static member function cannot be declared virtual. Dash remains in memory even when the object of a class has been destroyed. Static variable remain in the memory. Friend functions are non-member functions. Dash, which means if A declares B as its friend, it does not mean that A can access private of B. Friend is one way only. The statement object A is equal to object B, this will cause a compiler error. True. Identify which of the following overloaded operator function declaration is appropriate for the given class. Rational number, ये एक वेरिएबल रैशनल नंबर 1 और प्लस के साथ इन्होंने कर दिया 2.3, वेयर रैशनल नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड क्लास रैशनल नंबर। तो इसका ये आंसर है, ये कोड इस तरह से होगा, रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस डबल एंड ऑब्जेक्ट। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड? ये जो ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ये ओवरलोड नहीं हो सकता, बाकी हो जाता, और ये जो तीन दिए हैं ये ओवरलोड हो जाते हैं। टू कन्वर्ट फ्रॉम ए यूजर डिफाइंड क्लास बेस टू ए बेसिक टाइप, क्या होगा? ए कन्वर्जन ऑपरेटर दैट ए मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। टू कन्वर्ट अ यूजर डिफाइंड क्लास के लिए कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स अ मेंबर फंक्शन, उस क्लास का वो मेंबर फंक्शन भी हो। द टेक्निक इन विच विजुअलाइज अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। In object-oriented programming, class object can inherit properties from another class. A C++ class is similar to structures. What problem may occur when we copy object without using deep copy constructor? ये repeat हुआ है, all of the given. Suppose that test class does not have overloaded assignment operator. What happens when a class A is equal to B is type of two test object A and B? The copy constructor is used. A static member function can be called even when a class is not instantiated. ये वही क्वेश्चन पहले ऊपर वाला दोबारा रिपीट हुआ है, वही इसका आंसर है। Dash provide the facility to access data member. Accessor function provide the facility to access data member. Object cannot change their state. True. Dash relationship indicates an object contains other object. इनमें से कोई भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। Which one of the following feature of OP is used to derive a class from another? Inheritance. Inheritance is used to derive a class from another. Dash is a relationship. Inheritance is a relationship. Dash satisfy the condition of polymorphism. तीनों carbon, diamond, coal all satisfy the condition. Aggregation, separation, specialization relationship between classes are implemented using inheritance. That operator can be overloaded. True. In order to free the memory occupied by the object, we use destructor. जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके साथ डिस्ट्रक्टर ज़रूर बनाएंगे मेमोरी को फ्री करने के लिए। Which of the following is not an example of multiple inheritance? Woman is not an example of multiple inheritance. Static variable can be initialized more than once. True. A generic class showing all the common attribute behavior of other classes represents very important feature, no be called inheritance. We can get only one unique value which can be used all of the object that class by the use of static variable. A member function having same name that of the class
टिल्डा साइन विद इट्स का टिल्डा साइन यूज होता है डिस्ट्रक्टर के लिए, टिल्डा साइन विद इट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टर. Using encapsulation, we can achieve information hiding. Inheritance is a way to make general classes into more specific classes. Static variables can be initialized more than once. No, false है. Static variable only initialized once. For classes with common behavior, you can save effort by placing a common behavior in base class. Which of the following is the advantage of OOP? ये तीनों OOP के advantage है. Reuse the code, ability to create one user defined data type, facility to defining abstract data type. ये तीनों उसकी हैं advantages हैं. Dash operator can be or true. A static member function cannot be declared virtual. Static variable like global variable in context of scope of class true. Uh, the compiler won't object if you overload the static operator to perform division. True. We can use this pointer in the constructor in the body and even in the initialization list of any class. False. C++ class is similar to structure. Which operator cannot be overloaded? Conditional operator. An overloaded operator always requires one less argument than its number of operand. True. Generalization specialization relation between classes implemented using inheritance. Now, OP class is an example of user-defined type. A class can be identified from a statement by a noun. Members of a class that can be accessed without creating the object of that class is called public members. Suppose there is an object of person type, which of the following can be considered as one of its attribute, both the name and age. What a derived class can add? ये तीनों चीज़ें, data member, member function, friend function, constructor, destructor. Dash is used to access information hiding within an object private member functions. This pointer are not accessible for static member function. True. A static member function cannot be declared virtual. C++ component does not allow the dynamically allocate memory for object. True. Sorry, false है ये. Given the following class base int age की value 30 दे दी है. How you can improve this class whereas when access the default age? इसे क्या करेंगे? Define the variable age. एज जो है उसको प्राइवेट में हम करेंगे डिक्लेयर और क्रिएट अ गेट मेथड टू और रिटर्न द वैल्यू और सेट मेथड टू अपडेट द वैल्यू. गेट और सेट का मेथड यूज़ करेंगे. अच्छा, फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अल्टरनेट टू ईच अदर. ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑलवेज टेक्स नो आर्गुमेंट ओवरलोडेड. ये प्लस प्लस जो है इसको overload करें, take no will not take no any argument. अच्छा, suppose that the trust class does not have an overloaded assignment operator. What happens when an assignment is equal to b is type of two test object A and B? The copy constructor is used. Assume a class C with object 1 to 3 for statement object 3 object 2 correctly overloaded operator must return a value. Which operator cannot be overloaded? कंडीशनल. ये दोबारा रिपीट हो रही है, ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता. टू अचीव इंडिपेंडेंस एंड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस थ्रू एब्स्ट्रैक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन इनहेरिटेंस. ये कीपिंग क्वेश्चन है. कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कंपनी नीड्स टू सेव एम्प्लॉयर्स रिकॉर्ड 1 to 3. What a derived class can add? तीनों चीज़ें डाटा मेंबर ये दोबारा रिपीट हो रहा है. कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर. द कंसेप्ट ऑफ derived class is involved in inheritance. स्टूडेंट ये क्वेश्चन है. सपोज चीफ डिज़ाइनर शॉन स्केच कंप्यूटर पार्ट सिस्टम. तो टॉप ऑफ द हायरार्की इज ए क्लास कॉल्ड कंप्यूटर. टू चाइल्ड क्लासेज हैं इसकी, वन कॉल्ड लिनक्स पीसी और दूसरी जो विंडो पीसी. तो इसका जो आंसर है, आस्क फॉर ए रीडिज़ाइन ऑफ हायरार्की इन द चेंजिंग द ऑपरेटर सिस्टम टू फाइंड रादर देन क्लास टाइप. अच्छा स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसका कोड है. कंसिडर द कोड. क्लास फ्रेड पब्लिक में किया है फ्रेड के कंस्ट्रक्टर को. इंट मेन का है फ्रेड ए
का जो अरे है 10 उसको वैल्यू असाइन की है। फ्रेड का एक पॉइंटर पी है न्यू फ्रेड इज इक्वल टू न्यू फ्रेड 10। तो इसका जवाब ये है कि फ्रेड ए, ये जो है फर्स्ट फ्रेड ए कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 11 टाइम्स, और फ्रेड ये वाला जो है नीचे वाला ये कॉल्स द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 11 टाइम्स। ये आंसर है। Which constructor is the source for the creation of object new operator? New operator क्या करता है? The source for the creation of an object. New operator के जरिए आप नए ऑपरेटर को क्रिएट कर सकते हैं. This operator are not accessible for static members. True. When a variable is defined as static class, the object of this class have same copy for the variable. Dash remains in memory. Static variable remains in memory even the object of class has been destroyed. Given the following class base int age 30, define the variable age. ये दोबारा repeat हो रहा है. And the life of this object is not dependent on the life of the master class in aggregation में. Which one is not keyword in C++? ये जो b underscore op ये keyword use नहीं होता. ये ऑपरेटर कैन दिस ऑपरेटर कैन बी ऑलरेडी यस ट्रू. आइडेंटिफाई विच ये दोबारा रिपीट हो रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है. ए टेम्पलेट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू मेक ए स्टूडेंट फैमिली या फंक्शन एंड क्लासेस. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म डायनेमिक बाइंडिंग. व्हाट इज द ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट? द कंपाइलर जनरेट ए कॉपी ऑफ फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डाटा. Which of the following is the best approach if it required to have more than one function having exactly same functionality implemented on different data type? Template. ये एक कोड है टेम्पलेट क्लास वेक्टर कैरेक्टर इसका ये है. दिस इज एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन. ट्रू. अच्छा, ये क्वेश्चन है. क्लासेस लाइक 2-dimensional shape and 3-dimensional shape would normally be concrete. Classes like sphere and cube would normally be abstracted. False. ये भी concrete होती हैं. A non-virtual member function is defined in the base class and overridden in derived class. If function is called through a base class pointer to derived class object, derived class version is used. False. Assume a class derv that is privately derived from class base. Object of class derv located in main can access public members. In order to define a class template, the first line of the definition must be template. और ये इस तरह से ब्रैकेट्स में टाइप नेम स्पेस देके T capital. If there is a pointer P to the object of base class and it contains the address of the object of derived class and both classes contain a non-virtual member function ding, then the statement P greater than ding will use the version of the ding in the virtual class to be executed. When the base class and derived class have member function with the same memory, you must more specific with the function you want to call using operator overloading. Non-template friend functions of class are friend of all instances. Find algorithm takes iterator as its first two argument. If you define a vector v with the default constructor, define vector another w with a one argument constructor's total size of 11, insert 3 elements into each of the vectors, push back, then the size member function will return 3 for v and 11 for w. यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा. Which of the following may not be an integral part of the object? तीनों जो होते हैं स्टेट बिहेवियर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट के. विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस अवॉइडिंग द रीराइटिंग ऑफ कोड. तो स्टूडेंट ये एक फ़ाइल थी स्टूडेंट, ये एक और फाइल है, इसमें काफ़ी सारे MCQs हैं, ये आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. बहुत शुक्रिया.